Assalamualaikum students, I hope you all are fine. Today the work that we done in the classroom, that was subject science and the topic about living and non-living things. You did the introduction in the classroom on your page number 18 of your activity work of science. Plus you have the written work you did, that you have written the introduction of living things. Now the homework that you have to do, I have given you two homeworks. The number one is that you have to write the same homework that you have done in the classroom, like you have to write introduction of living things in your science copy. It is the same that you have done in the classroom, but the next work is little bit different. It is on page number 18 of science workbook. You have to do the activity A. Let me clear it to you which one I'm talking about. This whole you have done in the classroom, oral reading, but now this is activity A. Guess which things are non-living and which are living things above picture. They have given you these pictures. You have to write N with non-living things and L with living things. Fine. आपने इसमें से फाउंड आउट करना है कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी हैं. केजी क्लास, प्लीज़, दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट to all of you. Whenever you do your work, even you are doing it on your copy or even you are doing it in your workbook, you must write date and day on the top. और आपने date and day खुद लिखनी है और अब आपने सारा काम खुद करना है. आई हैव नोटिस्ड कि काफ़ी बच्चों को क्लास में राइटिंग बिल्कुल नहीं आ रही. बिल्कुल यू आर टोटली ब्लैंक इन द क्लासरूम और यू हैव नो कॉन्सेप्ट ऑफ राइटिंग डेट एंड डे, बिकॉज आई डोंट नो आपने मुझे जो ऑनलाइन काम सेंड किया है हु हैड डन दैट. एनीवे, जो हो गया, लीव दैट. नाउ इट्स योर बिगनिंग. आपका न्यू सेशन ऑलमोस्ट अभी स्टार्टेड है, तो अब आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है लिखने की. मैं अगेन आपको बता रही हूँ, ऑन पेज नंबर 18 आपने ये काम करना है ऑन योर वर्कबुक, और कॉपी का जो आपने काम करना है दैट इज़ सेम एज द होमवर्क दैट यू डिड इन द क्लासरूम. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.